आने वाले दिनों में गणेश विसर्जन और साथ ही ईद ए मिलाद का पर्व मनाया जाने वाला है, जिसके मद्देनजर डभोई में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ था, जिसके बाद 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम का आयोजन भी करवाया गया था। गणेश महोत्सव चल रहा है, जल्द ही गणेश विसर्जन होगा और उसी के साथ ईद ए मिलाद का पर्व भी मनाया जाएगा। तब डभोई नगर पालिका पर विधायक शैलेश मेहता की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक मिली थी। डभोई पुलिस थाने के पीआई केजे झाला, जिला पंचायत के उप प्रमुख अश्विन भाई, केडवनी मंडल के प्रमुख शशिकांत पटेल, एडवोकेट चीफ अफसर जयकिशन तड़वी, नगर पालिका के प्रमुख बीरेन्द्र शाह, साथ ही कांग्रेस पक्ष के सुभाष भाई भोजवाणी, महिला मोर्चा के प्रमुख सोनलबेन सोलंकी और साथ ही अन्य अग्रणी इस बैठक में मौजूद रहे थे। इसी के साथ हिंदू मुस्लिम समुदाय के अग्रणियों की मौजूदगी भी इस दौरान दर्ज की गई थी। गणेश विसर्जन और ईद ए मिलाद का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसीलिए जरूरी मुद्दों पर इस दौरान चर्चाएं की गई थी, जिसके बाद डभोई पुलिस की ओर से 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और उसी कार्यक्रम के तहत जिन लोगों के भी मोबाइल फ़ोन चोरी हुए हो या फिर जिन लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ हो, उन्हें उनकी रकम और मोबाइल फ़ोन वापस लौटाए गए थे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत 11 जितने मोबाइल फ़ोन मालिकों को ढूंढकर वापस लौटाए गए और 4 जितने लोगों को उनकी गुम हुई रकम ढूंढकर वापस लौटाई गई। आगामी 5 तारीखे ईद ए मिलाद और 6 तारीखे गणेश विसर्जन कार्यक्रम होय। डभोई पोलीस द्वारा आज शांति समिति मीटिंग, જેમાં ડભોઈ નગરના આગેવાનો, તમામ પક્ષના આગેવાનો, તમામ ધર્મના આગેવાનો આજે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। છેલ્લા 7-8 વર્ષથી ડભોઈ દર્ભાવતી બની રહ્યું છે, ત્યારે દર્ભાવતીની સંસ્કારિતા અને દર્ભાવતી શિસ્તપ્રિય નગરી છે એ એસ્ટાબ્લિશ થયેલું છે, એટલે બહુ કહેવાની જરૂર નથી હોતી। બંને કોમ સાથે મળીને બંને કોમના તહેવારો ખૂબ ઉલ્લાસપૂર્વક ઉજવે એના માટેનું આયોજન હતું। અને સાથે સાથે 13 तुझको અર્પણ કાર્યક્રમ પોલીસ દ્વારા જે લોકોના મોબાઈલો ચોરાઈ ગયા હોય, ખોવાઈ ગયા હોય, એને પરત મેળવવાના, સાથે સાથે સાયબર ક્રાઇમ જે ખૂબ જ વધી ગયા છે, એમાં પણ ઘણા લોકોએ જે રકમો ગુમાવી હોય એ રકમો પાછી લાવવાની અને એ પાછી લોકોને પરત કરવાની। એમાં 11 જેટલા મોબાઈલ અને 4 જેટલા લોકોના સાયબર ક્રાઇમમાં પરત મેળવેલી રકમો આજે પરત આપવામાં આવી છે। હું એ 11 મોબાઈલ ધારકોને 4 જેમના રૂપિયા ગુમાવ્યા હતા અને પરત મળ્યા છે, 15ને અભિનંદન આપું છું, શુભેચ્છા આપું। સાથે સાથે ડભોઈ પોલીસે જે આ કામગીરી કરીને લોકોના મોબાઈલ અને રકમો પરત આપી છે, પોલીસને પણ અભિનંદન આપું છું। અને આગામી તહેવારો બંને કોમ શાંતિની અને ઉલ્લાસપ્રિય રીતે ઉજવે અને હળીમળીને પોતપોતાના તહેવારો ઉજવે એવી અપીલ કરું છું। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।